अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर मॉनिटरिंग टेक्नीशियन के बारे में। व्हाट डू दे डू? अ न्यूक्लियर मॉनिटरिंग टेक्नीशियन कुड टीच researchers and clinicians how to safely handle and dispose of radiolabeled drugs, test levels of radiation on lab equipment to ensure the equipment is safe for researchers to use, track employee radiation exposure in the nuclear medicine wing of a hospital to ensure their safety, conduct emergency contaminated and evacuation drills with local response teams in a nuclear power plant. ओवरव्यू देख लेते हैं जी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू इमेज द ह्यूमन बॉडी, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, sterilize food and medical equipment, create pest or drought resistant seeds, and to generate power for 1 in 5 US homes and businesses. Nuclear monitoring technicians help to keep the people who work with nuclear technology and the environment safe from excessive radiation exposure. They use special instruments to measure and monitor the radiation level of workers, work areas, and equipment, and they are involved in decontaminating work areas to safe levels. They also educate workers on radiation safely. कोर टास्क देख लेते हैं जी। कोर टास्क न्यूक्लियर मॉनिटरिंग टेक्नीशियन के कौन कौन से कोर टास्क होते हैं जो उनको परफॉर्म करने पड़ते हैं। ब्रीफ वर्कर्स ऑन रेडिएशन लेवल्स इन वर्क एरियाज, कैलकुलेट सेफ रेडिएशन एक्सपोजर टाइम्स फॉर पर्सनल यूजिंग प्लांट contamination readings and prescribed safe levels of radiation, monitor personnel to determine the amounts and intensities of radiation exposures, inform supervisors when individual exposures or area radiation levels approach maximum permissible limits, provide initial response to abnormal events or to alarm from radiation monitoring equipment, determine intensities and types of radiation in work areas, equipment or materials using radiation detectors or other instruments, instruct personnel in radiation safety procedures and demonstrate use of protective clothing and equipment, collect samples of air, water, gases or solids to determine radioactivity levels of contamination, analyze samples such as air or water samples for contaminants or other elements, determine or recommend radioactive decontamination procedures according to the size and nature of equipment and the degree of contamination, set up equipment that automatically detects area radiation deviations and test detection equipment to ensure its accuracy, prepare reports describing contamination tests, material or equipment decontaminated or methods used in decontamination processes, place radioactive waste such as sweepings or broken sample bottles into containers for shipping or disposal, decontaminate objects by cleaning with soap or solvents or by abrading with wire brushes, buffing wheels or sand blasting machines.
जी तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।